Hello everyone, I hope I am audible, and in this video we will try to draft a sample suit of or for mandatory injunction. So let's see how to draft sample draft sample draft for a suit of mandatory injunction. And this is a kind of awareness video so that we can learn together how to draft. And in this we don't have to give money, ex spend money. We just learn by our own. Okay, so we don't have to write this line, but I am just writing it so that we can know what we are doing, what we are going to do. So this is a sample draft for a suit of mandatory injunction. It will start like in the court of district judge 30 Hazari Court, New Delhi. Civil suit number this civil suit number this of 2025. Okay, now in the matter between parties name, first a b c d, that gonna be plaintiff 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 versus versus party number 2 xy defendant defendant. Okay, so is it clear till yet? Let me change the font first.
This is fine. Should we move ahead? Now list list of list of dates and events, whatever we have. Date, hmm, and event. So we have here two dates, that is 1st April 2025, in which on which the defendant started rising construction and enroached upon the land upon the land of the plaintiff. मीन्स डिफेंडेंट ने इस तारीख को ज़मीन जो है वो हड़प लिया और उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया. The second date will be first first July, that gonna be 7 2025, and on this date the defendant constructed a floor beyond the prescribed legal limit of the 3 floors. The defendant started raising construction and encroached upon the land of the plaintiff. 1 तारीख को प्लेंटिफ की ज़मीन पे डिफेंडेंट ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया. वहीं पर 1 जुलाई को डिफेंडेंट ने क्या किया? डिफेंडेंट कंस्ट्रक्टेड अ फ्लोर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ द 3 फ्लोर्स. तो थ्री फ्लोर का जो है लिमिट था और उसके ऊपर जो है डिफेंडेंट ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, जो कि अलाउड नहीं था. So these were the two facts that we had. It can be more when we draft it. Okay. Hmm. So there is no need to this line. I hope you have seen this so that I can rub it now. So this page will look like this only. Our page number 1
is ready. Okay, now let's move to the next page. In this, we have to paste this here, and then this one too. Then now what is the purpose? Civil suit, civil suit seeking a permanent prohibitory and mandatory injunction against the defendant under section 37 and section 39 of the relief specific relief act 1963. So this is the heading. Now most respectfully sought, ये दिखाते हुए बहुत ही आदर और विनम्र भाव से जो है इंफॉर्मेशन बताया, फैक्ट बताया जाएगा. Description of the parties, the that the plaintiff is the owner in possession of the plot B 67 block A pocket 5 पश्चिम पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली and the pin code 11004, supposed to then that the defendant is the owner in possession of B 68 block A pocket pocket 5 पश्चिम बिहार न्यू
Delhi 110042. Okay, this is the description of the party. Then we have relations relationship between the parties. Then we have a relationship between the parties. that that the plaintiff and defendant have been neighbors since 1967, as they live in the same residential area, which is Paschim Vihar, New Delhi, New Delhi. That the the plaintiff 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 and defendant share share an otherwise friendly and friendly and cordial relationship with each other. Now what does it mean that the plaintiff and defendant have been neighbor since? जो plaintiff और defendant है ना 1967 से एक दूसरे के पड़ोसी रहे हैं. दे लिव इन द सेम रेजिडेंशियल एरिया, एक ही जगह पे रहते थे इन पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली. तो कहाँ पे रहते थे? पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली में. दैट द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट शेयर एन अदरवाइज फ्रेंडली एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद ईच अदर. जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है एक दूसरे के साथ जो है उनका दोस्ती का मतलब दोस्ती जैसा एक रिश्ता है एक दूसरे के साथ. नेक्स्ट, ब्रीफ facts that led to the filing of the present suit. Hmm. that the defendant during the month of, what was the month? Month of July 2025 has started
rising further construction on the top floor of his premises without without adhering to the rule to the rule prescribed prescribed by the law, and has further encroached upon the land of the plaintiff. This has caused obstruction of light, air, and sun to the building of the plaintiff. Besides nuisance to the plaintiff and his tenants, thereby depriving the plaintiff to his easement rights of light, air, and sun. Now let me check what is wrong in it. No, what's wrong? Plaintiff. Now, what this fact says that the defendant during the month of July 2025 has started raising further construction on the top of his premises without adhering to the rule prescribed by the law. कि डिफेंडेंट जो है वो जुलाई 2025 में जो है तीन फ्लोर बना सकते हैं एज पर द लॉज, एज पर द रूल्स। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग तीन फ्लोर बना सकते हैं, लेकिन अब जो है डिफेंडेंट क्या कर रहा है कि उसके ऊपर एक फ्लोर जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसकी वजह से जो है हमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके ऊपर जो हो रहा है उसकी वजह से ना हमें प्रॉपर लाइट मिल पा रही है, सन रेज नहीं मिल पा रहा है, ना एयर वेंटिलेशन का प्रॉपर हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, ना ही सूरज की रोशनी आ रही है, ना ही हम धूप ले पा रहे हैं। तो उस चीज़ों से हम वंचित वंचित हैं, और क्योंकि ये रूल के लॉ के अगेंस्ट भी है, क्योंकि इतनी हाइट जो है परमिसेबल नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जो है ये सूट है। दिस हैज़ कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट, एयर एंड सन टू द बिल्डिंग ऑफ द प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ का जो घर है उसके ऊपर जो है उसकी चक्कर में लाइट, एयर और सन नहीं मिल पा रहा है। बिसाइड कॉजिंग न्यूसेंस टू द प्लेंटिफ एंड हिज टेनेंट्स, देयरबाय डिप्राइविंग द लाइट एंड डिप्राइविंग द प्लेंटिफ टू हिज ईजमेंट्री राइट्स ऑफ, जो उसके राइट्स बनते हैं प्लेंटिफ के, उससे उसको वंचित रखा जा रहा है, ऐसा ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा के या करके। Now what the next passage says, that the cause of
action, cause of action occurred to the plaintiff on 1st July 2025 when the when the defendant completed the illegal construction beyond the third floor of his premises। ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन उस दिन अराइज होता है, 1 तारीख को अराइज होता है जिस दिन जो है डिफेंडेंट थर्ड फ्लोर के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है 4th फ्लोर का। दैट डिफेंडेंट defendant's residence is situated at Vasant Kunj, New Delhi, within the jurisdiction at limits of the territorial jurisdiction of this honorable court। Therefore, this honorable court possesses the territorial jurisdiction to entertain and try the present suit। Furthermore, as demon, demons, demonstrated above, the cause of action in the suit brought, brought forth has repeatedly arisen in New Delhi, that for the purpose of pecuniary jurisdiction and court fees, the present suit is valued as follow। Now let's understand what these two passages talks about। Therefore, cause of action तक हो गया था, उसके बाद that defendant's residence is situated at पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली, कि डिफेंडेंट का जो घर है वो पश्चिम बिहार में है। ठीक है। और पश्चिम बिहार की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो 30 के पास है, तो इसलिए जो है सूट जो है 30 में फाइल किया जा रहा है। देयरफॉर द ऑनरेबल कोर्ट पोजेसेस द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन एंड ट्राई द प्रेजेंट सूट। इसलिए क्योंकि इस ऑनरेबल कोर्ट के पास ये यहाँ की ज्यूरिसडिक्शन है पश्चिम बिहार की, तो वो इस कोर्ट को डील करे। फर्दरमोर, एज डेमोन्स्ट्रेटेड अबव, द कॉज ऑफ एक्शन इन द सूट ब्राउट फोर्थ हैड रिपीटेडली अराइजन इन न्यू दिल्ली। और क्योंकि जो कॉज ऑफ एक्शन बताया गया है वो दिल्ली में अराइज हुआ है, न्यू दिल्ली में, और जिसकी जो ऐसे एरिया में जिसकी ज्यूरिसडिक्शन आपके पास है, तो काइंडली इस केस को डील किया जाए। That for the purpose of pecuniary jurisdiction and court fee, the present suit is valued as follow।
उसके बाद पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है उसके लिए पैसेज आ जाएगा। वैल्यू ऑफ सूट, वैल्यू ऑफ सूट, अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस पेड, वैल्यू ऑफ jurisdiction in rupees 200, value for court fee in rupees dash ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जुरिडिक्शन इज 200, 200 चार्जेस होंगे, और वैल्यू फॉर कोर्ट फी जितनी भी बनती है, और अमाउंट ऑफ कोर्ट फी पेड, जितना अमाउंट पे कर दिया गया वो चीज़ मेंशन करनी होगी। तो दिस विल द चार्ट then that the present civil suit is being filed in a bona fide in a bona fide in a bona fide manner, and manner and is in the interest of the law। ये जो सूट है अच्छे इरादे से फाइल किया गया है, इसके पीछे किसी को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। that the that the that the present civil suit is being civil suit is non commercial इन नेचर। अगर कमर्शियल, ये कह रहा है कि कमर्शियल नेचर का नहीं है, क्योंकि कमर्शियल नेचर का होगा तो कमर्शियल कोर्ट में जाएगा, इस कोर्ट में नहीं, सिविल कोर्ट में नहीं, उसके लिए अलग से कोर्ट है। दैट द बैलेंस ऑफ convenience lies in favor of the plaintiff and not the defendant।
ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो आने जाने का किराया होगा इस केस के दौरान, जो पार्टी जो प्लेंटिफ जो है आएगी जाएगी, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह जो होंगे वो प्लेंटिफ को मिलने चाहिए, ना कि डिफेंडेंट को। दैट द plaintiff has a good prima facie case and has a chance of succeeding in the case, that the plaintiff that the plaintiff shall suffer irreparable loss of money if the reliefs in present civil suit are not allowed. ठीक है। that the plaintiff has a good prima facie case and has a chance of succeeding in the case, कि प्लेंटिफ के पास अच्छे वैलिड ग्राउंड्स हैं इस केस में, और इसके चांसेस इनके जीतने के चांसेस भी बनते हैं। that the plaintiff shall suffer irreparable loss of money if the reliefs present civil suits are not allowed। जो प्लेंटिफ है उसको ऐसे नुकसानों का सामना करना पड़ेगा जो कि भर नहीं सकता अगर ये जो रिलीफ है कोर्ट के द्वारा उसे नहीं मिला गया तो। that the plaintiff that the plaintiff has not filed a similar suit before this honorable court, or any other court। ओके, कि ये जो प्लेंटिफ है उन्होंने इसी से सिमिलर केस किसी और कोर्ट में फाइल नहीं किया है डिफेंडेंट को परेशान करने के लिए, ना ही इस कोर्ट में किया है ना किसी और कोर्ट में किया है, यही फर्स्ट टाइम फाइल कर रही हैं। द प्रेजेंट सिविल सूट इज maintainable in the eyes of the law। और कानून की नज़रों से देखिए तो ये जो सूट है ये इसको देखा जाए, इसको बरकरार रखा जाए, इसको इस पे कुछ किया जाए, एक्शन लिया जाए। that next line, that the annexures annexed in the suit are true copies of the respective original। जो उससे संबंधित जो प्रूफ्स हैं, जिसको हम एनेक्चर कहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन से संबंधित जो सपोर्ट करते हैं
प्लेंटिफ की तथ्यों को, प्लेंटिफ के फैक्ट को, दैट्स कॉल्ड corroborative evidences। तो वो सारे इसी के साथ, इसी सूट के साथ इसके नीचे लगा दिए गए हैं जो कि ओरिजिनल है। दैट द present suit is filed within within the period of the limitation provided under the Limitation Act 1963। इस एक्ट में जो है सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन दिया हुआ होता है, टाइमिंग मेंशन होती है लिमिटेशन एक्ट 1963 में, जिसमें मेंशन होता है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई प्लेंटिफ जो है, कोई पीड़ित जो है, वो कितना टाइम है उसके पास सूट फाइल करने के लिए, और वो एक बार, एक वो जो टाइम है एक बार निकल गया तो फिर वो सूट फाइल नहीं कर सकता। तो इस लाइन में वो कहा गया है कि अभी टाइम है, मतलब सफिशिएंट टाइम में, मतलब कोई एक्सपायर नहीं हुआ है टाइम, तो सफिशिएंट टाइम में जो है ये सूट जो है फाइल किया जा रहा है। नाउ द प्रेयर 4 पेज तो हो गए, ऑलमोस्ट 5, 1, 2, 3, 4, 4 पेज हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ इसको बाद में करूँ, ठीक है, इसको सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं।